Hello everyone, welcome to BlinkX by JM Financial. Today we are having Mr. Akshay Bhagwat, who's our research analyst, and he majorly looks at the derivatives, and he will be taking you through what is the market sentiment now, how you should be acting in this particular scenario, and he will display the BlinkX web app and all the charts, which are live charts here, and he will talk about how you should be acting in this market. Welcome, Akshay. Yeah, yeah. Hi, good afternoon to all. I believe there's a slight delay. Sorry for that. We will start the small webinar which we have. I will first take you to the dashboard. I believe you can all see the dashboard where today it's a week start for the Nifty index and the weekly expiry, the most awaited weekly expiry. Unfortunately, what's been happening since the last few days We is that cannot see the. Yeah, now yeah, it is visible. Your screen is it's, visible now. it's visible. Is it visible? Yes, it is. Okay. So, yeah. So what's happening since the last few trading sessions is that the volumes have dipped a lot in the weekly products, majorly for the Bombay Stock Exchange, BSE, and the NSE. One of the primary reasons can be that FNO trading has been curbed by the SEBI. Recently, you must be aware that the FII called Jane Street has been under the radar of SEBI, and their activities have been curbed, and that is primarily one of the reasons why the trading volumes have dipped. Secondly, also there are some measures which are doing rounds about further new policies which may come in options trading, which might be beneficial for retail participants, because as per one of the study, 9 out of 10 traders are on the wrong side. So the system has to be robust. That's the whole idea which SEBI is trying to protect the retail traders interest, and that is why initially, till the system adjusts to the new developments, the sentiment is bit damp, and the volumes are dipping a bit. But as we talk about the Nifty index today, if you were to look at Nifty, today the Nifty is trading roughly at 25,360. That's where it is for 10 July expiry. Now, if you were to look at how the day started, the first half an hour that we normally follow, the first half an hour rule, the first half an hour was a weak start for the day. 25,400 was an important support. We have broken the support of 25,400. If you recollect, before the start of the day, normally when we check data points, FIIs were sellers in prior trading session. That has been slightly the way the positioning has been lately in the 4 or 5 days. And with the breach of 25,400 support in Nifty, what I understand is that the support, the day view is on the negative side. तो अगर मैं निफ्टी का ओवरऑल आउटलुक आज के लिए देखूं, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था दिन का 25,400, वो ब्रेक कर गया निफ्टी। और अगर आप अगला सपोर्ट प्रिडिक्ट करेंगे तो कल का लो पॉइंट था 25,350, वो एक बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अभी हम ऑप्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ये लेफ्ट साइड पे कॉल्स है, राइट साइड पे पुट्स है। नॉर्मली हम देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, ताकि एक फेयर आइडिया आ जाए कि कॉल राइटर्स किस लेवल पे है और पुट राइटर्स कहाँ पे है। तो अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट चेंज देखेंगे पहले, तो अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जो एक्शन है वो 25,400 के कॉल में है, और पुट में है करीबन हाईएस्ट 25,400 पे। तो कहीं ना कहीं 25,400 इज विच वी कॉल अ स्ट्रैडल, बिकॉज इट इज अ सिंगल स्ट्राइक, दैट इज वेयर द एंटायर एक्शन इज बिल्डिंग अप फॉर द डे. If you look at the 4.25 lakh is the number of new open interest which has been added in calls, and if you look at here in puts, it is 2.26 lakh shares. So kahin na kahin call double hai puts ke. That is the first inference I am drawing looking at the action. And if you look at the second important strike, it is 25,450. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ओपन इंटरेस्ट चेंज इन कॉल्स एंड पुट्स, तो 3.45 lakh in calls and 82,000 odd shares in puts. So clearly
The call writers are piling up from 25,500 where they started the day. They have come down to lower strikes at 25,450, and even some are going for strikes of 25,400. So now, with this background in mind, we have a negative day to trade. And how will you trade? There is some momentum which is coming. So there are two trades I will pick up. One is if you are an option writer, and second is if you are an option buyer. Now PCR is at 0.55. It clearly means that when PCR is such at lower points, clearly the percentage of calls in the system is very high compared to the puts. तो जो राइटर्स का जो दबाव है कॉल राइटर्स का, वो काफी भारी है. द नंबर ऑफ ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में काफी डबल आप कह सकते हैं ओवर द पुट्स. एंड वो उसका कारण है क्योंकि कॉल राइटिंग का इंटेंट काफी हाई है आज के लिए. तो अगर आप लेवल वाइज ट्रेड करना चाहे तो 25,350 सेकेंड सेशन के लिए, जो अगले 3 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना सपोर्ट जोन होगा. और 25,400 410 ये एक रेजिस्टेंस होगा. तो एक 50 पॉइंट का एक बैंड है अपना जिसमें हमको ट्रेड करना है. तो फिलहाल अगर आप पहले ऑप्शन राइटर है तो आपको क्या करना है वो उसकी मैं जानकारी दूंगा. तो आपको 25,300 ये पुट जो है वो मेरे हिसाब से इसके नीचे तो एक्सपायरी जाते हुए नहीं लग पा रही है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 25,400 पे ही है. 350 पे भी कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, पर 25,300 के नीचे जाने की उम्मीद बहुत कम है. तो 25,300 का पुट आप बेच सकते हैं फॉर टुडेज एक्सपायरी डे. आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पे रहेगा 25,290 का, 25,290 का ये एक स्टॉप लॉस बनेगा स्पॉट लेवल पे. ये पुट आपको बेचना है. और अगर कॉल आपको कहीं ना कहीं बेचना है तो थोड़ा सा आपको कम रिस्क लेना है. मेरे हिसाब से 25,550, हालांकि प्रीमियम बहुत कम है इसमें. लास्ट ट्रेडेड प्राइस सिर्फ ₹5 का है. लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है विक्स. तो अगर ₹5 आपके लिए मायने रखता है तो ही आप ये कॉल बेचे, क्योंकि इसके ऊपर तो जाते हुए नहीं लग रहा है. तो अपना बैंड ऑप्शंस पे बन चुका है. 25,300 पुट सेल, 25,550 कॉल सेल. ये रही ऑप्शन राइटर्स के लिए ट्रेड. अगर आप अभी बायर हो और आपको ये टाइम करना है कि कौन सा पॉइंट सही रहेगा बाइंग के लिए, तो यहाँ पे आपको कोई भी बाइंग करनी है तो एक बार सपोर्ट पे आ जाने दीजिए निफ्टी को 25,350 के आसपास. वो कल का लो पॉइंट था, वहां पे आए तो कुछ ट्रैक्शन अपने को मिलेगा कि वहां से कुछ मोमेंटम मिल सकता है. तो 25,300 यहाँ से 15 पॉइंट दूर है. अगर उसके आसपास भी आए तो एक आप हाई रिस्क कॉल बाइंग की रणनीति बना सकते हैं. यू कैन गो फॉर बाइंग 25,350 strike in put. I think if you look at this, I think somewhere the premium, if you look at it, it is around 48. सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ फर्दर 15 रुपीज डाउन साइड. ये 48 का जो है मेरे हिसाब से 30 या 35 तक आ जाएगा कॉल का प्रीमियम. वहां पे आप एक हीरो जीरो का ट्रेड कॉल बाइंग में बना सकते हैं. मैंने कह रहा हूँ कि 25,450 जाएगी आज के लिए, वो श्योर नहीं हूँ क्योंकि 400 एक रेजिस्टेंस है. पर ये आप कॉल अगर 30 और 35 रुपए में बाय करेंगे, वहां से एक बाउंस बैक भी आ गया क्योंकि टेक्निकली वो एक अच्छा सपोर्ट है. तो अगर 30 एट द मनी बाय कर रहे हैं हम लोग, तो आज एक्सपायरी डे है तो फ्यूचर्स के उसका डेल्टा ऑलमोस्ट 0.9 या 0.95 रहेगा. उसका मतलब है कि जितना स्टॉक फ्यूचर्स में चलेगा उतना ही आपका ऑप्शन भी चलना है. तो 30-40 रुपीज की उम्मीद अगर हम करें बाउंस बैक की, then we can see that 30-35 rupees premium going to 70-75. So this is the best trade you can look forward to. Let it come to 25,350, 360. If someone is high risk, you can go for buying at the money at the current rate also, which is around 50, 51. It is only for high risk traders. But from here, if 25,400 hits, then 50 rupees last traded price will easily go to 875 or 80, and that's a good 30 rupees gain percentage wise. So I think it will be around almost 40 to 50% of your premium gains of what you bought. So this is the best case I look at from expiry day. Today, news-wise, we are actively looking at how US will react. The mini tariff deal which is on, that is the news. But that I believe before the day started, there has been a slight delay. जो date आज का था वो 31st July तक हो चुका है अभी. So the bargaining process is still on. So at least that news is not going to hit during the day. So rest assured, it's going to be a choppy session. But somewhere the thought process is 25,350, that's the lower end of the support. 25,410, that's the upper end of the resistance. This is the range for the Nifty, and that is how the trade placement is. आपको मैंने trade
कॉल बायर के लिए बता दिया है, और ऑप्शन राइटर के लिए क्या करना है वो भी बता दिया है. सो ऑल द बेस्ट टू आवर वीकली ऑप्शन ट्रेडर्स फॉर अ सक्सेसफुल डे. अक्षय, सो ये बैंक निफ्टी के लिए क्या रेंज रहेगा? जी. तो बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द हीट मैप हियर. सो हियर इफ यू गो टू द डैशबोर्ड, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट. So this is the dashboard. If you look at bank nifty is 57075 today, and bank nifty somewhere, if you look at the options data for bank nifty, it is more or less choppy. अभी हमारे पास बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो उसके चलते अगर आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की पोजीशनिंग देखें कहाँ पे है बैंक निफ्टी में, तो 25, I think overall open interest wise, if you were to look at the open interest somewhere in terms of the action today, is at 57,100 in calls, which has presence of around 7.7 lakh, and 50,000 call, which has around 34,000 contracts. So clearly 57,000 में काफी action है आज. और कहीं ना कहीं if you look at the put side of this data, then the open interest change, if you were to look at, there is increasing traction at the strike of 57,000. So straddle जो कहते हैं हम 57,000 की कॉल और पुट, ये बेचा जा रहा है, ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है देख के, बिकॉज बैंक निफ्टी का ओवरऑल जो आउटलुक है इट इज मोर रेंज बाउंड. सो इफ यू सेल दिस 57,000 स्ट्रैडल, आपको कॉल में आपका प्रीमियम करीबन 790 800 रुपीज का है, और पुट का आपका प्रीमियम है 568. तो आप अगर कॉल और पुट का प्रीमियम जोड़ दे इसमें, तो 800 प्लस 500 रफली 1300 से 1400 पॉइंट का एक रेंज है. सो रफली 58,500 इज द अपर एंड ऑफ द रेंज. मैं क्या कर रहा हूँ, जो जोड़ी है कॉल पुट का प्रीमियम का, उसको जोड़ रहा हूँ 57,000 के ऊपर, और नीचे का जो लेवल है वो बनेगा 55,500. सो 50, आई थिंक सॉरी 56,500. सो 56,500 is your support, and 58,500 is the resistance. आपको as an option writer you can sell both of these calls and puts to play the range. And if you were to search a directional trade, there is no trade setup in bank nifty, because if you look at the individual constituents, it's a mixed day. कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक इज सेविंग द डे फॉर बैंक निफ्टी. स्टेट बैंक में थोड़ा मोमेंटम था, बट द अदर पीएसयू बैंक्स आर अ लगार्ड. Again, ICICI Bank is a laggard, HDFC Bank is a laggard. So I don't think Bank Nifty for intraday will have much steam. It will be range bound. It is best to set the short strangle strategy for the monthly expiry in Bank Nifty. थैंक यू सो मच अक्षय, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग इन. हम हमारे ऐसे ही वेबिनार्स ट्यूसडेज एंड थर्सडेज 12 बजे लेकर आते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्सपायरी डेज हैं, एंड दैट डे यू गेट टू अंडरस्टैंड हाउ यू नो व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द मार्केट आउटलुक फ्रॉम आवर रिसर्च एनालिस्ट. सो थैंक यू एवरीवन, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ऑल ऑफ यू अगेन ऑन ट्यूसडे 12 p.m. थैंक यू अक्षय. Thank you.